Hello everyone, my name is Rupika from 3C class. Now I'm going to do the activity on enormous turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A boy came. We want to pull up the enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. Old man and the old woman and the boy pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A girl came. We want to pull up the enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. Up came the enormous turnip. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman, the boy and the girl. And they did. The moral of the lesson is unity is strength. Where there is unity, there is always victory. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. There is more power in unity than division. If there is power in unity, there is power in strength. Let us see the meaning of enormous. Oversized, king size, massive, extreme, major, large, immense, vast, gigantic, heavy, ample, bulky, stout, giant, lofty, huge, and hefty. Let us see the meaning of tiny. Narrow, slight, minor, limited, short, ordinary, minute, petty, miniature, little, small, microscopic, inconsiderable. Let us see the nouns. Naming words are called nouns. Man, woman, turnip, seeds, time, boy and girl. Let us see the describing words. Adjectives are called describing words. Old man. Old is the describing word. Old woman. Old is the describing word. Enormous turnip. Enormous is the describing word. Let us see the verbs. Present tense, past tense and past participle. Plant, planted, planted. Grow, grew, grown. Want, wanted, wanted. Say, said, said. Pull, pulled, pulled. Can, could. Come, came, come. Help, helped, helped. Now let us see the opposites. Enormous. Tiny. Pull. Push. Up. Down. Far. Near. Black. White. True. False. Dark. Light. Right. Left. Good. Bad. Now gender opposite. Man. Woman. Boy. Girl. Let us see the phonics activity. Words ending with O ears.
insectivorous, continuous, mischievous, dangerous, delicious, carnivorous, fantabulous, prestigious, marvelous, omnivorous, simultaneous, melodious, herbivorous, mysterious, glamorous, nutritious, odorous, precious, obvious, jealous, numerous, enormous, generous, luminous, gorgeous, fabulous, previous, gaseous, glorious, nervous. दादाजी ने बच्चे में एक सलकम बोया, जिसके पास जाकर यो कहा करता था, सलगम सलगम बड़े हो जाओ, सलगम सलगम बड़े हो जाओ। एक दिन दादाजी ने सोचा सलगम तो बड़ा हो गया, इसको अब उकरना है। दादाजी ने पत्तों से सलगम को पकड़ा, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। इसको अब उकरना है। दादाजी ने पत्तों से सलगम तो पकड़ लिया, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। दादाजी ने बुलाया दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। दादी जी ने बुलाया सुरेश को, सुरेश ने पकड़ा दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। सुरेश ने बुलाया रानी को, रानी ने पकड़ा सुरेश को, सुरेश ने पकड़ा दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। रानी ने बुलाया टामी को, टामी ने पकड़ा रानी को, रानी ने पकड़ा सुरेश को, सुरेश ने पकड़ा दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। टॉमी ने बुलाया बिल्ली को, बिल्ली ने पकड़ा टॉमी को, टॉमी ने पकड़ा रानी को, रानी ने पकड़ा सुरेश को, सुरेश ने पकड़ा दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा फिर भी सलगम नहीं उकड़ा। बिल्ली ने बुलाया चूहिया को, चूहिया ने पकड़ा बिल्ली को, बिल्ली ने पकड़ा टॉमी को, टॉमी ने पकड़ा रानी को, रानी ने पकड़ा सुरेश को, सुरेश ने पकड़ा दादी जी को, दादी जी ने पकड़ा दादाजी को, दादाजी ने पकड़ा सलगम को, जोश खींचा सलगम तो उकड़ गया। सबके नीचे चूहिया गिरा, चूहिया के ऊपर बिल्ली गिरी, बिल्ली के ऊपर टॉमी गिरा, टॉमी के ऊपर रानी गिरी, रानी के ऊपर सुरेश गिरा, सुरेश के ऊपर दादी जी गिरी, दादी जी के ऊपर दादाजी गिरा, के ऊपर सलगम गिरा। Bye, see you next time.